Okay, Zara. Zara. Okay, good, got it. Learning on the job. Okay, these Hello. comments will keep coming in. So do you want me to turn the comments and let them remain on? Because for me, it covers like Zara's face and Farah's face, but it's okay. Yeah, let it come because maybe we'll take one or two questions if that's okay. I can hear a lot of noise from one of you. I think Zara's mic is giving too much noise background. Okay, good. Now it's great. Good job. Awesome, everybody. Welcome. I shall have the honor of initiating this beautiful mehfil conversation, enlightening group of women with me, very esteemed. So first of all, on the screen, you can see Anushya Ashraf. She is a very well-known TV personality, artist, human rights and animal rights activist. Then we have Farah at the bottom on the right, left of my screen. Farah Saeed has been an amazing name in the field of mental health. Her accolades are there. They're so amazing that I think I'll let you guys read it. But she has been a mentor and a guide for me in my life and for so many others. And she has, broken a lot of ceilings for us in Pakistan, talking about so many issues that we find difficult to talk about. So thank you, Farah, for being with us today and taking out time for us. And last but not the least, Zara. She's also my sister, so you're not seeing double. She is my twin sister. But she is a warrior and an inspirational woman for all of us. Especially women, to have gone through so much, and mental health has been something she's advocating because she became very aware of these issues earlier on in her life, and taking help and therapy for mental health has helped her come very, very far. And now she's a successful architect, businesswoman, and a single mother. So welcome all of you lovely ladies to this beautiful gathering. So let me introduce everybody to the topic for today, which Anushya has beautifully pinned for everyone to see. Awareness, knowledge, and access to help in Pakistan, a mental health dialogue. So I would like for us to understand that we are on a journey in this life towards self-actualization. हम अपनी तलाश में सबसे ज़्यादा रहते हैं और हम ढूंढ रहे होते हैं, एक तलाश में होते हैं, एक सुकून की तलाश में होते हैं, जिसके लिए हम बहुत सी दफ़ा खुदा का रास्ता चुनते हैं, बहुत सी दफ़ा अपनी हॉबीज़ को ढूंढते हैं. तो वी हैव लॉस्ट Zara. We'll wait for her to come back. Hopefully this will work out because she has a lot of beautiful things to share with us today. But I shall carry on the dialogue, and what I want to do first of all is to invite all of you to understand कि हम इंसान जो हैं वो हम एक मुरक्कब हैं. We are human, we are beings, we are body, we are soul, we are mind, we are emotions, we are so many things. And to understand ourselves, we need a holistic approach. We need so many people to support us, help us, make us understand who we are. और उसके लिए सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. जो चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ वो मुझे फरा सिखाती हैं, वो मुझे अनुषा सिखाती हैं, मुझे ज़ाहरा सिखाती हैं, और जो चीज़ें वो नहीं जानते उनको हम मिलके एक दूसरे को हम सीखते भी हैं, और लर्निंग का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए. So, without further ado, I would like to put my first question to Farah, and I would like you to introduce to all of us. क्योंकि जब हमने dry run किया था तो फराह ने जो बातें बोली, even though I've been involved with mental health for so long, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, and I was very excited by what she shared. So Farah, please help us understand what is mental health. What does a healthy person look like, and what is a mental health crisis? Let's hear it. I think let's simplify that every individual has a life to live. So if you can identify pleasure, joy, happiness, and the livingness in you, and then what sort of lifestyle you choose for yourself. You have roles to play, you have function to perform, and then
you entertain yourself. So collectively, if you're doing all of these things, ups and downs, manageable, then you're mentally healthy. Right. Mental health comes in the crisis when you feel mainly you're unable to perform your task, function, or role. That's when you need to pay attention to that what is happening with me. All right. Thank you. Thank you. That's a very easy way of understanding instead of going into Exactly. difficult terminology. So that makes it very simple. So आपने हमसे बात की थी, you know, you had explained to us certain aspects of this journey about self-awareness, about knowledge, and there were certain steps that you had explained to us. So I would like you to briefly give these pointers to us about that. Okay. So when we talk about self-awareness, you need to start with intrapersonal, means my own awareness about my body, mind, and my feelings. And then how am I doing in my own eyes? And the second part of self-awareness is interpersonal. How am I doing in my relationships, and how my colleagues, my friends, my family, my children, or anyone around me are telling me or saying things to me about me. So you have this intra and interpersonal way of being aware about your own mental health or your own presence. In terms of, there are three major aspects which are, I think, very simple to identify when it comes to self-awareness of mental health. Let's say if you have eating disorder, when I say, it simply means that eating more or eating less, whatever the pattern you have, if you deviate. Second, sleep disorder, you sleep less or more. So any deviation is kind of, you need to bring attention, what is happening with me. Third, mood disorder. So am I meeting people or avoiding them? If I am one of those who enjoy me time more, do I want to go out, or have I increased me time, means isolation? So all these major three are the self-awareness of how am I doing. Should I talk about knowledge as well, Fatma? Let me come back to this later. And this was really good for us to feed on and go into a little bit more detail. Thank you so much, Farah, for that explanation. I think बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास एक विजुअल क्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को गेज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, चाहे वो हमारे दोस्त हों, फैमिली हो, हम इन चीज़ों से क्यूज ले रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ओके इन योर डेली रूटीन इफ देयर इज एन एबनॉर्मैलिटी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम उसको एक अटेंशन दें. तो फरा आपको क्या लगता है कि जी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, जिसमें हम क्लैरिटी और बिल्डअप कर सकते हैं, वो है सिंपल सिम्टम्स. Simple symptoms like when people, they say, why are you so irritable? Why are you laughing so much? Why you are talking very fast, or you are changing your topics, or you are not paying attention, or you're losing your track. You're not smiling. You're laughing more, or you're more irritable. Why are you snapping? So when you start hearing these things from people who are there for you, or who were not saying it consistently, then simply means that you need to pay attention to your mental health. And the question is, how am I? How am I doing? How am I doing? Thank you, Farah. Thank you. One more thing I would like to ask you here, which I think only you can help all of us understand, कि ये symptoms कितने अरसे तक हम देखेंगे जब हमें इसको एक you know, वैसे तो तगय्युर होता है लाइफ में, you know, every day there are changes, wake up, sleep, थोड़े changes चलते रहते हैं, but how do we gauge कि अब ये जो चीज़ है कितने अरसे तक हम इन चीज़ों को नोट करेंगे और फिर हम कहेंगे कि okay, now I need to pay attention to this. Yeah, very simple, Fatma. Let me give you an example of exam. We all give exam. So
when we start getting tense about exam, if we are getting tense and doing nothing for 6 months, we are making a place for this stress to stay with us. So even after exam, we feel the tension because tension has taken a place in us. So any symptom consistently, if it stays for 6 months under stress, our situation doesn't change, we harbor or we create a space for stress, tension, and anxiety. And then the symptoms are when the stress starts taking a place in us, symptoms are slowly, gradually intensify. Frequency and the intensity both increase. Thank you so much for bringing that to our attention कि 6 महीने का time हम अपने आप को दें और फिर not just to ourselves but the people around us, and then we can start saying, okay, well, something needs to be done about this. Thank you so much. So now I will I'm gonna move on to Zahra, because Zahra is here with us to share her journey through mental health, with us. So Zahra, I would love to hear from you कि इस वक्त जो फराह ने हमसे बातें की हैं उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, and how did these aspects that Farah talked about resonated with you in your journey? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं. आपकी आवाज नहीं आ रही है Zahra. Can't hear you. Okay, can you hear me now? Perfect. Yeah. Yeah, okay, perfect. So basically, I think for me, वही बात है, early like detection वाली बात is the first step, right? So मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में, घरों में, जैसे हम culture, house, उन चीज़ों के अगर हम हवाले से बात करें, तो can you guys hear me? Yes, we can hear you. Hello. Yeah, we can hear you. Go on. Yeah, we can. Hello, hear can you hear me? Yeah. We can hear you. Keep going. Okay, now the voice is gone. No, I think a connection is a little tricky. But वो video रुकती है, voice तो आ रही थी. Zahra, we can. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. आपकी खाली video थोड़ी रुक रही है. Go on. I can hear you. I'm so sorry. I don't know what's happening with my internet. I've got my Wi-Fi and my data. Everything is on. Not sure what's happening. Okay, so I'm back. I hope that it doesn't happen again. So basically, मैं ये बोल रही थी कि हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे जहाँ पे हम पढ़ते हैं या काम करते हैं, normalizing certain stresses, right? Like अगर हमारी environment में it's normalized कि हाँ तो परेशानी तो हर वक्त रहती है या हर वक्त उदास रहना इज नॉर्मल, तो आपके लिए फिर डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है. या आप अगर उन घरों में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मलाइज सिचुएशन होती है जिसमें आपके लिए बहुत मुश्किल होता है टू सी कि अब मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, मतलब मैं तो इतने सालों से इसी इन्वायरमेंट पे रही हूँ, क्या इज देयर समथिंग दैट नीड्स टू बी डिटेक्टेड. सो फर्स्ट स्टेप फॉर मी वाज टू अंडरस्टैंड दैट मेरे लिए बहुत सालों तक I didn't detect it until I had my daughter and I realized that I wasn't happy for her. जब I wanted to see her happy, मैं अपने आप को तो नहीं देख पाती थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो फिर मैंने देखा कि I can't be a happy mom for her like other moms. I can't enjoy those things. So what's going on here? You know, how can I be a happy mom? And the answer was really simple. I needed to be happy. You know, it was as simple, and that's where my journey started, where I started questioning कि मेरे साथ हो क्या रहा है. Like Farah very simply put it कि every day maybe waking up हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है, how am I doing today? You know, how am I doing today? And that literally was the beginning of my journey. And after that, it was also meeting friends who were supportive of that. Like I very clearly remember I had a friend who told me कि ये टैबू नहीं है, एंड आई थिंक हमने इस बारे में बहुत बातें कर ली हैं. लाइक लाइफ सिचुएशंस होती हैं तो आप फ्रेंड से बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि
हाँ यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हूँ. And then after a while my friend said, look, you've been talking about the same thing for a very long time. We haven't been able to find a solution. It's been going on in circles. You need a professional to help you find answers to your problems, you know. And उस टाइम पे जैसे हम जब बात करते हैं तो हम अपने सपोर्ट सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम सबके पास कोई ना कोई दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहनें होती हैं, माँ होती है, जिससे हम अपने जाके जिसको हम बोलते हैं कि दिल का बोझ उतार के हम आ जाते हैं और फिर हम इफ यू फील बेटर, लाइफ गोज ऑन, यू फील हैप्पी, दैट्स फाइन. बट इफ दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड लाइक फॉर अस एट 6 months is like a time where you say यार ये तो जा ही नहीं रहा. And for me it was many years, it wasn't 6 months. मेरे लिए तो तकरीबन एक decade था जिसके बाद मैंने realize किया कि oh my god, like I've been living in a very sad, depressed state of mind for a very long time, and it's time for me to find professional help. And that was of course another journey in itself. All right, we will come back to your journey. Thank you so much for sharing your vulnerability, with so much vulnerability, your journey with us, because it inspires so many others to understand that it's never too late. यानी अगर आपको 10 साल भी लगे उस जगह से निकलने की, not late, you know, हमेशा रोशनी का दरवाजा खुला है. And that is why we are having this dialogue. कि कभी भी ये ना सोचे कि बहुत देर हो चुकी, you know, कहते हैं जब तक सांस है उस वक्त तक होप है. So, Anushi, thank you for patiently listening to us and giving us this space. I want to now come to you and ask you, Anushi, कि किस तरह आपका रुझान बढ़ा towards mental health? What factors have made you so passionate about this journey? And how are you so involved in this subject? So I think around 4 years ago, I was also diagnosed with clinical depression, and I was a happy-go-lucky sort of person, हंसी मजाक और करियर भी अच्छा जा रहा है और फैमिली भी साथ चल रही है और दोस्त भी हैं, सब हैं. बट स्लोली ग्रेजुअली वेरी सडनली, मतलब एक दो ट्रिगर्स यकीनन होंगे, लेकिन अपने मूड में एक डिप देखना शुरू किया मैंने कि मेरा दिल जो है मेरे काम में नहीं लग रहा इतना. मुझे सुबह उठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिस्तर से निकलने में. ये जो आप हाइजीन के बारे में बात करते हैं, नहाना धोना सीम लाइक बट टास्क, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी एक थोड़ी सी अवेयरनेस थी ऑलरेडी, जो बहुत लोगों को शायद नहीं है, तो उससे मुझे कुछ समझ में आया कि शायद मुझे मदद की ज़रूरत है या मुझे किसी से बात करनी चाहिए कि वो मुझे बताएं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि why am I feeling this way. And I think you know what really triggered it was the fact that my mother one day told me that you haven't left your room in 5 days and you haven't even played with the dogs, because, you know, and that's when I realized okay, and I was like, okay, I only have enough energy to go to a doctor maybe and ask a professional what is going on. And I was working those days, you know, I had just taken time off because I'd messaged him and said, मुझसे नहीं हो सकता. But I've never done something so unprofessional in my life. And the reason why I decided to take this upon myself to talk about it is because I realized that, you know, how it affected me and how I suffered and how I don't want other people to suffer the same way. And then I have seen cases go wrong because people have not gotten the right help at the right time. I've seen people be on the wrong kind of medication and not respond properly. I've seen so many disaster stories. When I look at them, I'm like, you know, ये इंसान ठीक हो सकता है. हम इसको पागल कह के पागल खाने में डाल देते हैं, या हम कहते हैं कि ये नफ्सियाती है, इसको बीमारी है, right? And I was like, इसका कोई ना कोई तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक बीमार इंसान है और इसका इलाज नहीं हो पा रहा और इसको लोग पागल कह रहे हैं, you know. And it really upset me and hurt me. And telling people myself that I was seeking help was very like 50-50 sort of response from the people around me. Are you serious? Are you going to go to the doctor? So I, you know, I was like, oh my goodness. So I was like, but इतनी बेइज्जती अगर है ही, और तो फिर खुल के करते हैं, लोगों की मदद ही कर लेते हैं, you know. So that's why I decided to take it on myself, because I have a bit of a public platform, and I was like, I'd like to use it as much as I possibly can to talk about how it helps me
it helped me and continues to help me. Like, I still have bad days and good days where I struggle, but you know, more stable than ever before, and more just like knowing how to handle the dips better Amazing. after seeking help. Thank you so much, Anusha, for sharing that with us. We're so grateful to you कि आप अपनी इस personal journey को you know, इतने courage के साथ सबसे share करी. Being a person in public eye, you know, it takes a lot of courage, and that just shows your you know, stamina, with your you know, mental flexibility and capacity. यहाँ पे I would really like to go back to Farah, and you know, जिस तरह से अनुषा ने बात की कि अगर करना ही है, लोगों से 50-50% हमें यू नो मिलते हैं रिस्पॉन्सेज, अच्छे बुरे. तो जिस तरह से किसी को बुखार होता है, कोई बीमार होता है, उसको दर्द या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो हम उसको ये तो नहीं कहते हाय इसको बुखार हो गया है, कितनी बुरी बात है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, कितनी बुरी बात है, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, यू नो. तो जस्ट बिकॉज वी कांट सी मेंटल इलनेस, बिकॉज वो एक विजुअल हमें उस किस्म की चीज नहीं होती कि फटा हुआ वूंड है या टूटी हुई टांग है या टेम्परेचर दिख रहा है थर्मामीटर में, तो हम उसको इस तरह इग्नोर कर देते हैं जैसे कोई चीज नहीं है. लेकिन इट इज वेरी रियल एंड इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, यू नो. क्योंकि जैसे यू नो एक हदीस है कि आपका एक इमाम होता है हर चीज में, यू नो. यू हैव अ लीडर दैट्स लीडिंग यू एवरीथिंग. और ब्रेन जो है वो बॉडी का इमाम है, you know. If the brain and mental health is not in its place, everything is going to be haywire. So, you know, to bring that attention to mental health means to bring health to everything, you know, all aspects of your lives. So, Farah, I want to go back and ask you about this idea. जैसे अनुषा ने कहा कि my mother noticed कि आप 5 दिन से कमरे से नहीं निकले हो. तो इसमें you know, I want to now move on to the other 2 aspects जो हमने पहले डिस्कस किए थे, फीलिंग एंड एक्सेसिबिलिटी, जिसमें आपने लोगों के बारे में हमें समझाया था. कुड यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट? देखो, जैसे अनुषा अभी एक बात कह रही थी, और आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस स्टिग्मा. अब इस स्टिग्मा की उर्दू में सोच रही हूँ क्या हो सकती है, कि सेल्फ स्टिग्मा और सोसाइटल स्टिग्मा. पहला तो ये कि व्हेन आई एम अनवेल, हाउ एम आई डाउटिंग माय ओन हेल्थ, कि नहीं ठीक हूँ. जैसे अनुषा कह रहे थे कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो हैप्पी गो लकी है. दैट मीन्स कि जब सिम्टम्स आ रहे थे, अनुषा उनको सप्रेस किए जा रहे थे, रिप्रेस किए जा रहे थे, और कह रही थी नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, टिल द टाइम शी कुडंट गेट अप. सो दैट मीन्स बिफोर दैट पॉइंट व्हेन शी कुड नॉट गेट अप, at least from 6 to 8 months she was not feeling well, but somehow she did not pay attention. So when it comes to feeling, हमारे यहाँ लैंग्वेज में एहसासात की बात हम करते हैं, हम शायरी में एहसासात की बात करते हैं, कुछ रिश्तों में जब हम डायलॉग करते हैं, ड्रामों में हम देखते हैं कि वो एहसासात की बात करते हैं. तो जब आपकी फैमिली, आपके दोस्त एहसासात की बात करते हैं, उसमें आप कहें कि यार मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा. दूसरे एक और चीज ये है कि मेरी सोचें. सो देयर आर 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बीइंग. बीइंग मीन्स एज ए होलिस्टिक मी, existing, and I can see myself in my thoughts, I can see myself in my body, I can see myself in my feelings. So when these 3 elements are aligned, I'm healthy, because there are day-to-day conflicts, but they are not bothering me. But if there are conflicts which are unmanageable between my thoughts and in my action and my feelings, then the more the conflict gets terrible, unbelievable, unmanageable, and there is no conscious awareness of it, then I'm gradually, internally collapsing. So when this whole thing is happening, क्या मैं गूगल कर रही हूँ, क्या मैं फेसबुक पे उन ग्रुप्स को ढूंढ रही हूँ कि जिनके साथ ये होता है, तो क्या होता है, आई हैव सीन पीपल कि वो गूगल में जाके सिम्टम खट डालते हैं, और फिर दे हैव दीज लिंक्स, एंड देन उन लिंक्स में वो ग्रुप, I have seen 13-year-old, 14-year-old not talking about what they are going through,
but doing this and joining these different groups internationally, and but we are not sure कि उस ग्रुप में वो लोग क्या बात कर रहे हैं, सेफ है नहीं है. And again, it is comforting that I'm not alone, but it is not a treatment. So when it comes to your knowledge and how you get aware, another step is looking around. What can I do for myself? How can I help myself? Who is there in my surrounding whom I can trust and talk about what is there for me? Is there someone who can guide me? Another aspect also, hearing stories of other people. It's like, जैसे आप अनुषा की बात कर रहे थे कि इनका एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया है. अब इनके इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं, जब अनुषा अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो उन लोगों को encouragement होगी कि भाई I can also talk about it. I think since there is a focus and there is an attention on mental health all over the world, all kinds of celebrities, all kinds, whether they are players, whether they are there are movies or heroes or whatever, all of them are coming out and talking about that. Let's normalize it. Let's talk about it. So let's look around and find help. Another aspect हमारी सोसाइटी में है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो faith healers के पास जाते हैं, which is fine. However, faith healing as well as scientific healing, how you create a combination of both. Thank you so much. अनुषा, आपने कुछ ऐड करना था इस बिलीव? हाँ, उसमें एक सवाल आया था यहाँ पे और मैं फौरन ही इस पे जंप करना चाह रही थी because it's so pertinent and it bothers me all the time when people ask, okay, so how do you deal with depression without medication? So I mean, I don't have the answer. Of course, Farah will have the answer, but I would definitely tell them that to trust your doctor with what he says, right? नहीं अनुषा, देखो एक तो बात ये है कि when it comes to stigma attached depression, to taking medication with for depression, but you can take medication for even a headache, but something as dreadful as depression or anxiety, which is debilitating, is like दवाइयों पे है, आपको पता है? No, it bothers me a little bit. I think अनुषा, तुम दो तीन चीजें मिक्स कर रहे हो. पहली तो ये बात, एक तो पहला सवाल ये है कि मेडिकेशन की कब जरूरत आती है और काउंसलिंग या थेरेपी कब काम करती है. तो मेडिकेशन की जरूरत उस वक्त आती है जब आप फंक्शनली डिसेबल होने लगे. जैसे तुमने फोन किया और कहा कि मैं आज नहीं आ सकती और आपको अनप्रोफेशनल लगा, या आप मदर हैं या फादर हैं या आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर अनएबल कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है मुझसे, सो आप साइकियाट्री या मेडिसिन की तरफ जाते हैं. दूसरी बात जो तुम मिक्स कर रहे थे इससे कि नीड फॉर इट, एंड द सेकंड थिंग इज स्टिग्मा अराउंड इट. सो अगर आप डायबिटिक हैं और आप उसकी मेडिकेशन पे हैं तो आप उसका जिक्र भी नहीं करते. हाउ यू नॉर्मलाइज इट. आपको हार्ट के इशू है, आपको एंजाइना है, आप जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं, आप उनकी भी बात नहीं करते. लेकिन जब मेंटल हेल्थ के हवाले से आप मेडिकेशन लेते हैं तो आप उसको हाइड करते हैं, आप उसका जिक्र नहीं करते. और स्टिग्मा है कि लोग समझेंगे कि मेरा दिमाग खराब है और मैं पागल हो रहा हूँ. अब ये सोसाइटल स्टिग्मा एंड इनहिबिशन और रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मेडिकेशन के, जैसे अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, मुझे दवाई मिली तो स्टैंप लग जाएगा कि वाकई आई हैव सम मेंटल डिसऑर्डर. नहीं, लेकिन उसके बजाय हम उनकी शादी करा सकते हैं, उनको पहाड़ों में भेज सकते हैं, उनको पार्क ले जाते हैं शाम में रोज. अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बंदा जो है नहीं वो किस तरह से नहीं निकल पा रहा. अनुषा, ये बात नहीं है. हाँ, तो देखो होता ये है कि तुम जो है मेनली सीवियर इलनेसेस की तरफ जा रहे हो. हमें मेंटल हेल्थ को पूरे स्पेक्ट्रम पे देखना होगा.
सिवियर इलनेसेस वो जब हो जाती हैं, जब वो क्रॉनिक हो जाती हैं, और कोई डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया में उसका ऑनसेट के बाद, उसके ऑनसेट के बाद आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिप्लीटेड हो जाती है। वो आप बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं जहां सिवियर इलनेसेस आती हैं। अभी हम सिंपल एंजाइटी, क्राइंग, डिप्रेसिव सिम्टम्स, फाइंड डिफिकल्ट टू हैव एनर्जी, हम शुरू की बात कर रहे हैं या हम क्रॉनिक की तरफ बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो क्रॉनिक की तरफ चला जाएगा। अब जब हम क्रॉनिक की बात करते हैं तो उसकी मेडिकेशन के साथ साथ वो सब कुछ भी होना चाहिए जो आप सजेस्ट कर रहे हो। शादी भी ठीक है और पार्क में ले जाना भी ठीक है, ये सब कुछ भी करना है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लान भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। उसके बगैर ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। Amazing, yes. Thank you so much, because this was actually my next question, and I think I will run it through Zara and come back to you, Farah, because I think you are the access right now for us. You have so much to give us, so thank you so much. Zara, आपसे एक question है कि अभी आपने बात in all of this, tell us something about your journey and how you found it. Did you find the right therapist in one go? What was your journey through medication? Did it help? Was it a bad experience? और अब आप जहाँ हैं, इन चीजों का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट? So I think I want to start off बिल्कुल एक क्लियर उस पे जो फराह ने बोला कि चीजें आपके लिए जरूरी हैं और एक चीज आपकी ट्रीटमेंट है। तो हेलो, या सो आप उसका नेमुल बदल पार्ट में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर कर देते हैं। जैसे अगर आप डल हैं, अगर आप अपसेट हैं, तो अगर आप पार्क में चले जाएंगे तो आपका थोड़ी देर के लिए वाकई में आपका लाइक आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पार्क चले गए थोड़ी देर के लिए तो अब आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, या बस थोड़ी देर के लिए मैं ठीक हो गई तो इसका मतलब मेरा डिप्रेशन चला गया। तो आई वांट टू कम बैक to the symptoms of depression as well. Hello? Yes, please go on. Yeah, we can hear you. Fatma, you're frozen also. Oh no, I don't know. जा रहे हो? हाँ. Yeah, I'm so sorry about this. Okay, so I was saying कि symptoms की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं ना कि पागल हो गए, ये सब क्या है? लाइक आई नो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, एक बात तो ये थी कि मुझे मेडिकेशन की इसलिए जरूरत थी कि मेरी बेटी थी, मेरी जॉब थी और मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझसे उठा नहीं जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उठ के काम नहीं कर सकती, मैं माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं कर सकती। इवन अपने आप के लिए दिन गुजर जाता था और मुझे ख्याल आता था कि ओ मुझे ये काम करना है। दूसरी बात ये कि जो मेरे सिम्टम्स थे, बार बार चीजों में गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, अपने आप से उलझन होने लगना कि यार आई एम प्लानिंग द होल डे, मेरे दिमाग में ये सब कुछ है और मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। सो उस टाइम पे यू अंडरस्टैंड दैट नाउ दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपने इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, आपको फोन उठा के किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी, आपको अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट ओके टुडे, आई एम नॉट ओके, आई नीड हेल्प, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। आप इवन नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके अपनी डिप्रेसिव सिम्टम्स के बारे में अगर बात करेंगे कि मैं हर वक्त बहुत उदास होती हूँ, मुझसे चीजों में दिल नहीं लगता, मैं काम नहीं कर पाती, एंड दोज थिंग्स वर गेटिंग टू मच फॉर मी ऑब्वियसली, इवन एज अ मदर दे बिकेम रियली मैग्निफाइड, राइट। अब अपने आप पे ये होता है कि जो हम प्रिटेंड करने की बात कर रहे थे कि मैं दूसरे लोगों के सामने प्रिटेंड भी कर लेती थी, अपने आप को उठा के, अब किसी ने दावत दी हुई है, हाँ बोला वह, उठ के आप अपने आप को ड्रैग करके वहां चले भी जाते हो, फेक स्माइल भी कर लेते हो, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कर लेते हो, स्मॉल टॉक कर लेते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम यू जस्ट डेड, यू डोंट नो कि आपकी जिंदगी में अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, आपको कैसी जिंदगी गुजारनी है, घर में काम कैसे करने। सो माय
think definitely started with this awareness that I just had those physical symptoms. I just couldn't function anymore. I needed help. I accepted I need help. And then after that, my journey started where मैंने काफी सारे psychiatrists, psychologists, और मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं बाहर रहती थी. Even बाहर रहने के बावजूद, I saw a few psychologists. ऑस्ट्रेलिया में मैंने 2-3 काउंसलर्स देखे, 2-3 psychiatrists देखे. I was on a different medication for nearly 2 years. It didn't work, but also मेरे दिमाग में stigma था. I didn't want to be called a mental health patient. तो मैं अपनी दवाइयाँ भी skip करती थी, you know, like I wasn't very happy about it. I was like, मैं ठीक हूँ, like एक हफ्ता आप ठीक हो गए, you just want to tell yourself कि अब मैं ठीक हो गई हूँ. And then it went on to a point where it just became really bad. Matlab, I just couldn't run away from it anymore. I started having panic attacks, nervous breakdown, couldn't go to work anymore. मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी. I had to move back, stay with my family for a few months. I was in intense therapy, which meant मैं काउंसलर को हफ्ते में 2 दफा देख रही थी. And I was on a medication as well alongside. So मुझे डर बहुत लगता था बिकॉज मैं ये सोचती थी कि ये दवाई जो है वो मेरे माइंड को इफेक्ट कर रही है. बट आई नीडेड दैट मेडिकेशन बिकॉज आई हैड नो अदर वे. एंड फॉर नियरली 2 years दैट मेडिकेशन हेल्प मी टू स्टॉप जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिव चीजें चल रही होती थी हर वक्त चल होती थी. इवन व्हाइल आई वुड बी ड्राइविंग, सो आई वुड कॉन्स्टेंटली बी थिंकिंग कि ये बंदा क्या सोच रहा है, इसने ऐसे तो नहीं सोचा, मैंने सही गाड़ी तो नहीं, नॉर्मल वे. मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग इसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं और हर वक्त वो फिक्र में होते हैं और हर वक्त उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए डिसीजंस करने पड़ते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता होगा. एंड आई रियलाइज दैट आई नीड दिस चैटर टू स्टॉप एंड आई कुडंट स्टॉप इट. एंड देन द मेडिकेशन हैज टू वर्क. और जब मेडिकेशन काम करती है तो आपको पता चलता है इस तरह से कि वो चैटर जो आपके दिमाग में चल रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है और आपको दूसरी बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं, लोगों की बात आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट्स व्हेन काउंसलिंग really started to work for me. So it was really an important step, you know, like the whole journey was about trial error. किसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, किसकी बातें आपको इफेक्ट कर रही हैं, कौन सी मेडिकेशन आपको इफेक्ट कर रही है. बट आई थिंक इन ऑल ऑफ दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि आई जस्ट हैड टू फाइंड अ वे टू गेट बेटर. सो आई हैड टू make this promise to myself कि मैं किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से I will find a way to get better. And alhamdulillah, it's been like more than 10 years of a journey. That is so inspirational because, you know, people need to hear that I will find a way out, that I will be out of this. Because, you know, I pretty much similarly felt the same way. And what kept me going was the fact that a little bit of faith and belief that no, God will help me and that I will help myself. But there has to be a way. बहुत bad, annoying. Thank you, Zara. Yeah, the mic was too loud. Okay. Yes, Anusha, please go on. No, I'm saying that it was very much the same thing with me, that, you know, you just had to find a way out, and no matter how much you feel like giving up or you feel like this is just not working out, you know, but that's when your support system and stuff comes in, you know, people who keep you afloat in those times, because they make you feel like just hang in there, we'll figure it out. And every time I'd hear it from my friends or family, then I'd feel a little more hopeful and go back to sleep. Amazing. But at least go back to sleep. Yes, but thank you for being so real, Anusha, because this is all of our journeys and struggles. We just have a few more minutes to go, and I want to put in a few questions here. So एक दो तीन चीजें हैं. Let's see how they go. मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, और what I noticed is number 1 कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, फरा बहुत क्विकली हमें बताएं कि जब नॉर्मली कहते हैं ओ आई एम सो डिप्रेस, मेरी पार्टी कैंसिल हो गई, ओ आई एम सो डिप्रेस, फिर वो एक नॉर्मलाइज हो जाता है वर्ड डिप्रेशन. तो आप प्लीज हमें ये समझाएं कि मेरे जूते गुम हो गए, पता है, आई वांटेड टू किल माय सेल्फ.
Yeah, I was exactly. so upset. Somebody said, "I want to kill myself." मेरे जूते गुम हो गए थे. You know how much I paid for it? I said, "You know what it feels like to want to kill yourself?" That's all I could say. I'm so sorry. मैं आपको बात कर रही हूँ. Yeah, जज्बाती yeah, इंसान. yes. So, बना थोड़ा सा Yeah, that you I think like. फातिमा तुम्हारा जो सवाल है मेनली वो हमारी अटेंशन दो तीन चीजों पे लेके आता है. पहला तो ये कि हम कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डीमीनिंग है और कैजुअल है. तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा कि लव्स डिप्रेशन जो है वो पेनाडोल नहीं है जिसको आप ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करते रहें. तो लैंग्वेज का ख्याल रखिए. जैसे अनुषे ने बात करते करते कहा कि बदनाम तो हो चुके हैं तो चलो कुछ काम भी कर लें. अब जैसे मेंटल हेल्थ के हवाले से आपने अपने आप को एक्सपोज किया तो आपने कहा कि ये जैसे स्टिग्मा अगेन यूजिंग दैट लैंग्वेज कि बेइज्जती हो गई है. So how roughly somehow we associate the language that that is something we are doing which we shouldn't have done. So again, stigma, blaming, एक ये चीज. सेकंड एक और चीज है कि मेडिसिन जो है वो किस तरह आपके लिए सूटेबल बने, थेरेपिस्ट किस तरह आपके लिए सूटेबल बने. तो आप जब तक अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, अपने हक को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप उस राइट सर्च के लिए, द राइट पर्सन, द राइट मेडिसिन, द राइट प्लेस के लिए जा नहीं सकेंगे. अगर आप अंडर स्टिग्मा ढूंढेंगे तो आप सेटल फॉर लेस और रॉन्ग हो जाएंगे. बिकॉज फॉर सम पीपल, जैसे सवाल ये था कि डिप्रेशन को मेडिसिन के बगैर कैसे ट्रीट किया जाए. There is an unfortunate part that for some people medicine don't work. For some people, slightest of the smallest dose works very well. So again, spectrum. Always focus on a spectrum. Attention, finding the right person for your help, looking for the right psychiatrist. If you need therapy, how to align all of it. Thank you so much, Farah. So we're seeing that there's a difference between a therapist and a counselor who speaks and does those kind of sessions, और फिर एक psychiatrist होता है जो medication आपको prescribe करके देता है. And so do we have a good connection of these two areas in therapy in Pakistan? Do you think that we need more work in this field? क्या ख्याल है आपका फराह इस बारे में? I think कनेक्शन तो है. एक तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट की लिस्ट जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल की हैं. तो इफ यू सर्च यू विल फाइंड in all the cities of major cities, at least for Pakistan, you will find counselor, therapist, आपको मिल जाते हैं. Yes, when it comes to psychiatrists, there are very few who are pro-therapy, and there are quite a lot who only promote medicine. However, there are certain situations where only medicine can work very well. And there are certain situations only therapy can work very well. Mainly severe illnesses and chronic aspect of mental health where you need to join both majorly. That you need a therapist as well as psychiatrist. Medicine can only look after your symptoms. So जैसे ज़ारा ने बड़ी प्यारी बात की कि वो जो चैटर बॉक्स था, कॉन्शियस नेगेटिव कांस्टेंट थॉट प्रोसेसेस थे, वो चैटर बॉक्स मेडिसिन से स्लो डाउन हो गया. एटलीस्ट वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है मेडिसिन को लुक आफ्टर दैट. बट देन द इश्यूज ऑफ हर लाइफ as it is, they needed to be addressed. And issues in our life could be again internal conflicts, freedom, autonomy, choosing your own life, family conflicts, trauma, lack of achievement, and
undiagnosed learning disabilities, undiagnosed ADHD. So there are so many areas when it comes to health. Thank you so much, Farah. During our conversation मैंने 2-3 चीज़ें ये नोट की कि लोग हमें जो मैसेजेस कर रहे थे उसमें कुछ मैसेजेस ये आ रहे थे कि मैं रात को सो नहीं सकती, प्लीज अनुषे मुझे हेल्प कर दें. और यू नो आई वाज वाचिंग द कमेंट्स, आप मुझे हेल्प कर दें. तो आई वांट टू ब्रिंग दिस टू एवरीबॉडीज अटेंशन कि ये जो हम कॉन्वर्सेशन इस वक्त कर रहे हैं ये वो जगह नहीं है जहाँ से हम एक्सपर्ट एडवाइस उठाएंगे अपने पर्सनल सिचुएशन के लिए. यहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को इस बात पे आमादा करें कि नाउ आई नीड प्रोफेशनल हेल्प. इफ आई नीड इट, आई नीड टू से यस टू इट. तो ये वो जगह नहीं है, या इस किस्म के जो सर्कल्स होते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, वहां आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं मिल रही. और ये वो जो होता है ना, वो नीम हकीम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ चीजें उठा के अपना खुद से इलाज करना शुरू कर दें. तो आई वांट टू गिव दैट डिस्क्लेमर कि यहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि आप जाके अपना पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान एक्सप्लोर करें. So that is one thing. The other thing is, who's your first point of contact? I'm so sorry मैं तुम्हारी बात करते रहती हूँ. No, please go. मैं प्रोफेशनल हैजर्ड है मेरा एक. लेकिन फराज साहबा से एक सवाल है कि who should be your first point of contact? Both. You can go to counselor and you can also approach psychiatrist at the same time. Like if this person is looking and saying that I'm unable to sleep, find a counselor, talk about what is bothering her, find a therapist, find a psychiatrist who can immediately prescribe some medicine so she can sleep or he can sleep. And then address that actually नींद किसने चुराई है, वो कहानी क्या है जो नींद चुरा रहा है. Right, going to the root cause of the situation. Yeah. तो एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि जो हमने शुरू में बात की थी कि सिम्टम्स जो विजुअल होने लगते हैं, उसमें हमारे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ये होती है कि ये तो ड्रामा हो रहा है, इसको तो कोई बहाना चाहिए लेजी बनने का, काम नहीं करने का, या फिर ये कि ये तो बहुत नाशुक्री है, इतना अल्लाह ने दिया है और ये तो नाशुक्री पे नाशुक्री है. तो इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस जो है, जैसे आपने कहा कि ट्रिवियलाइज करते हैं, हम उसको डिमीन करते हैं इन सिचुएशंस को. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम इस कॉन्शियसनेस को लेकर आए कि इंसान है भाई, हम रोबोट नहीं है, हम मशीन्स नहीं है, विच इज ए नॉर्मल. ये नॉर्मलाइज किया गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आई थिंक इंसानों को मशीन से इक्वेट किया गया और उसके बहुत रेपरकशंस हमने देखे. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू आवर अटेंशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमने मेडिकेशन की बात की फरा, तो लोगों के जहनों में, जैसे ज़ारा ने भी कहा कि मुझे डर लगता था मेडिकेशन लेने से, तो आपने कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट साइकाइट्रिस्ट भी हो सकता है और साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है. तो मैं खुद भी अपना फियर आपको बता रही हूँ कि मुझे हमेशा से ये खौफ रहता था कि अगर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगी तो उसका तो टू पुट इट इन अ वेरी रॉ, उसका तो धंधा ही दवा देना है, राइट? वो तो देगा ही दवा. तो फिर आई डोंट वांट टू टेक मेडिकेशन, so why should I go to a psychiatrist? You know, I would rather heal it without taking any chemicals into my body. तो क्या मेडिसिन वाकई में लॉन्ग टर्म हमें कोई ऐसे इरिवर्सिबल इफेक्ट्स करती है जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं? No, not at all. I think medicine mainly symptoms को look after करनी चाहिए. और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उससे सवाल करें कि ये मेडिसिन जो आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरे लिए क्या हेल्प करेगा, ये मुझे सुलाएगा या मेरा दिमाग सुन कर देगा, या मैं सुबह खड़ी हो जाऊंगी या नहीं होंगी. So which symptoms will be looked after by this medicine? Number one. Number two, the earliest you approach the treatment plan, which could be medicine and therapist both, or only therapy to begin with, the earliest you approach, the less you have a chance to take long-term medication. But when it comes to chronic illnesses, and when we talk about chronic anxiety and depression, or schizophrenia or bipolar disorder, that means more than 5 years you have been suffering with these symptoms, then most of the time medicine are for long term. In between you may recover,
But with that, you need to work on your rehabilitation also, coming back to the real and normal life. All right. So for some people, it may be. For some people, it may be few days, few months, few years. Every biology, every person has different set of needs, has different set of support system. Right. Thank you so much, ये Farah. भी बात ना करो कि there are different kinds of medications, जैसे आपके फीवर और हर तरह की मेडिकेशन की भी प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट अलग अलग होता है. तो वो जो आप बात करनी थी कि कोई मेडिसिन लाइक यू नो इफ यू बीन सफरिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो उसको डिटेक्ट करना और मालूम करना कि कौन सा इंग्रेडिएंट है जो मेरी बॉडी को चाहिए, जो मेरे दिमाग को इस वक्त सेरोटोनिन कम है या कोई और डोपामीन कम है. लाइक देयर डिफरेंट थिंग्स which make us happy and regulate our emotions. तो वो जो मेडिकेशंस होती है वो भी हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं. तो घबराना इस तरह से मतलब नहीं हो चाहिए कि यू नो लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आप कभी कोई मेडिकेशन ट्राई करें और वो ना चले तो यू नो आप ना घबराएं. लाइक गो एंड ट्राई अनदर वन एंड से ठीक है. एंड which also Go brings me to to the your point कि how doctor. long do you Go to your doctor and say कि ये symptoms अभी भी हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है. और डॉक्टर भी आपको 3 से 6 हफ्ते में दोबारा बुलाते हैं ताकि वो देख सकें. तो gradually आपको अपनी बॉडी. And another thing is कि each one of us has a mastery of our own self. We are the master of our body. We are the master of our mental health. So the better you take charge of your mastery, pay attention, learn about yourself, and then look for the treatment. So working with intuition and our doctor together and taking it side by side can give us a good combination. And doctors can be both psychiatrist and a therapist. It can become a good triangle of me, my therapist, and my psychiatrist. So we have a lot to talk about. We have a lot. Of this is a very deep subject. Inshallah, before I give my closing remarks, I would like to just address one thing जो हमने अपने dry run में बहुत अच्छे से note की थी कि is this mental issue, mental health का issue, क्या ये DNA based होता है, क्या ये by birth होता है, और क्या ऐसा होता है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, या आपको लगता है कि नहीं, कैसी भी हालत हो हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं, रिसर्च जो है, रिसर्च ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये डीएनए बेस है या नहीं है. रिसर्च ये कहती है कि इवन पेरेंट्स इफ दे आर सफरिंग विद मेंटल हेल्थ एंड दे हैव ट्विंस, वन may suffer, one may not suffer, and both may not suffer, or both may suffer. So it has nothing to do with your DNA. You're not born with mental illnesses. When when in a family, people, they say we do have many family members who suffered with heart problem. In the same way, people, they can say that in our family, many people, they suffered with mental health. But don't forget nature and nurture. You may born the perfect human being and your life may be very challenging. Even as a child, you may suffer with mental health. You may be born with really weak heart or weak lungs or weak mental capacity, but you're well taken care of. You're raised with a lot of love and care. You will have a healthy life relatively. So just be aware of all the aspects and everything will be good. Just take care of yourself. Thank you, Farah. I believe that you have shared me for a bit more. So thank you so much, Farah, with all our gratitude for joining us, enlightening us, teaching us. We learned so much today about ourselves, about taking care of ourselves. So thank you so much. Thank you so much. Have a good day, guys. How do I check out?
All right. So thank you. I'm clocking in an hour on my thing. Okay. Yeah, we're almost done. I just have one thing to ask you, Anushe. I wanted to just ask you one thing. Recently, आपने you did this stories about mental health for men. तो थोड़ा सा उस पे आप बता के if you can I will, so when we talk about stigma and women, going to a psychiatrist or a therapist for help and stuff, I've actually gotten a lot of stories into my inbox where men are like, it's worse for us. And I believe them to a certain extent क्योंकि फिर उनको कहा जाता है कि भाई this is a sign of weakness, काम नहीं करोगे तो घर नहीं चला सकोगे, तुम्हारा है, ये काम तो तुम्हारा है, घर चलाने का, ये पैसों का संभालने का, या लड़के रोते नहीं हैं, लड़के उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं, मर्द बनो, they grow up in our society hearing this their entire lives. So I did a series, and the sort of trauma that men have gone through has been very real as well. So I just wanted to highlight that this year because मैं 3 साल से लगी हुई हूँ, हर साल मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, highlight. तो इस दफा I just wanted to talk about mental health in terms of men, and realizing that it all starts very early for men and women. There's some sort of abuse in the house, emotional, mental, physical. There's some sort of violence in the house, and there's somebody in the house who's creating you to become nervous, who's creating you to not be able to sleep properly, whatever the deal is. And from whatever little I've gotten together, उससे मुझे यही है कि बस इस पे जितनी बात की जाए कम है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं. Right. Thank you. Inshallah, in the future, we will try and cover as much as we possibly can. Yes. But just being heard is sometimes a big relief for a lot of people. Absolutely. और अच्छी बात मुझे ये लगी थी अनुषे कि औरतें हर वक्त ये कह रही होती हैं कि मर्दों को औरतों के हुकूक के बारे में बात करनी चाहिए. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि as a woman you also spoke about men's rights and men's issues, and उनकी भी दिल की आपने बात सुनी. तो बहुत अच्छा लगा. This was an amazing, very well spent 1 hour of my life. Thank you guys for enriching me and also many of us with your precious time. Zara and Anushe, very grateful for your presence today. Thank you. Grateful for you for making it happen. Thank you so much. Until we do this again, take care, you guys, and bye-bye.